Hello guys, so today our topic is cell division, which is a very important topic for the purpose of examination, and it also tells us the entire steps how a cell divide and give rise to new cell. So in this we're going to study two types of cell division. One is mitosis and another one is meiosis. Mitosis happen in our somatic cell. So most of the division that happen in our body is mitosis. Meiosis only happen in the germ cell. Germ cell in the sense sex cell. That means in order to form sperm and ova, the meiosis takes place. And you know sperm and ova has half number of chromosome. Whereas human normal cell, somatic cells have 46 chromosome, right? So that is the purpose. In the mitosis you will find get diploid cell. Diploid means the cell which has 46 chromosome, which is also called 2n chromosome. And in sperm cell you get half number of chromosome in the germ cell. So meiosis, one cell divide to give 4 haploid cell. That is what meiosis is. Haploid means half number of chromosome, right? And in mitosis, one cell divide to give 2 daughter cell. And the 2 daughter cell both are diploid. That means both have 46 chromosome. Now if I also give you a little bit overview of this cell division, what actually happen in a cell division. So if you actually see a cell, the cell is divided into few stages. One is called the G1 stage. Then comes the S stage, then comes the G2 stage, and then comes the M stage, that is mitosis. Okay, so these are the 4 stages. If you go from G1 to S stage, so G1 to S, G1 to G2 stage, this entire G2 stage, they are come into the category of interphase. They are called interphase. Okay, let me change the color if it's not visible. So yeah, it's interphase, and this interphase is of longer duration. Like suppose if the cell division take 24 hours, so interphase will take 23 hours, like G1S and G2. And mitosis will only take, this mitosis where actual cell division happen, it only take 1 hour to complete. Okay, so we have interphase and we have mitosis phase. That's what how the cell division is divided. Let's see them in detail. Here are few definitions are given of the cell division. It is the process by which a parent cell divides and give you 2 or more daughter cells. It happen for growth, your repair, reproduction and genetic continuity. We do have 2 types of division, mitosis and meiosis. I already told you meiosis is for germ cell and mitosis is for somatic cell. Here you can see the cycle. So yes, the first starts with the G1 stage. In the G1 stage, this is the stage of interphase, right? G1S and G2. And then comes the mitosis, that is the actual division stage, right? So in G1 stage, what happened? The cellular contents duplicated. So all the organelles that we have, like mitochondria or endoplasmic reticulum, Golgi body, they all duplicated in G1 stage. Then we also have a checkpoint which ensure that these processes have been done, right? Once this been completely done, then the cell goes to another stage which is called S phase, where the chromosome get duplicated. That means here basically DNA duplication occur. DNA get duplicated. So one chromosome, if this is one chromosome, so it has 2 DNA, you know, because the DNA duplication has taken place. So DNA has duplicated in each of the 46 chromosome. Now therefore the chromosome need to divide, because the DNA is duplicated and chromosome become heavy, so they cannot carry that much of genetic material, so they divide.
So the chromosome divides so that the DNA can also divide and pass on. If all the chromosomes, get duplicated, here another checkpoint is present that checks whether the entire DNA chromosome get duplicated or not. Then it goes to G2 stage, which is the final stage that ensures that everything is fine. The cell size is fine, size of the cell is fine, duplication has done perfectly. The repairment, if a cell needed, then it could be repaired, or it should be a healthy cell. If everything is fine, then we say that the cell is ready, and this is the end of the interphase. So you can see this blue line indicate the entire interphase. अब यहाँ पे इंटरफेस ख़त्म हो गया है, दिस इज़ द एंड ऑफ द इंटरफेस. यहाँ से फिर माइटोसिस शुरू हो गया है. माइटोसिस के 4 स्टेप्स है. लेट मी टेल यू टू रिमेंबर वे ऑफ रिमेंबरिंग द नेम. सो जस्ट पुट P बिफोर मैट. These are the stages: Prophase, Metaphase, Anaphase and Telophase, right? And then Cytokinesis, where the cell divide and finally you get 2 daughter cell. So this is what happening in this entire process. Now if you closely look over here, तो यहाँ पे आपको एक और स्टेज दिखेगा जिसको G0 स्टेज कहते हैं. दिस इज कॉल्ड G0 स्टेज. कुछ सेल्स एक बार डिवीजन होने के बाद वापस से इस साइकिल में नहीं जाते हैं. ओके वो एक अलग से साइकिल में चले जाते हैं जिनको G0 स्टेज बोला जाता है, जहाँ पे जाके वो अरेस्ट हो जाते हैं. मतलब अब वो फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे. ऐसे कुछ सेल्स का एग्जाम्पल है हमारे ब्रेन के नर्व सेल्स या फिर कार्डियक सेल्स. दे स्टॉप डिवाइडिंग. एक बार जब उनका डिवीजन हो गया, अब वो डिवाइड नहीं करेंगे, तो वो अरेस्ट हो गए एक स्टेट पे, और वो स्टेट फिर कोई चेंज नहीं कर सकता वंस दे गेट अरेस्टेड. हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी कभी वैसा कुछ, तो दे कैन अगेन गो इनटू द साइकिल, बट दैट्स वेरी रेयर. अब अगर आपको ये पूरी साइकिल इंटरफेस और माइटोसिस की समझ आ गई है, तो विल स्टार्ट विद द माइटोसिस नाउ, जो कि एक सोमैटिक सेल डिवीज़न है जिसमें आपको एट द एंड रिजल्ट 2N सेल मिलेंगे. डिप्लॉइड सेल जिसके पास 46 क्रोमोसोम होगा, और ये ग्रोथ और रिपेयर के लिए होता है. ठीक है. सो लेट्स सी द स्टेप्स ऑफ माइटोसिस. फ्यू पॉइंट्स आर रिटन. सोमैटिक सेल में होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस होता है, क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड ही रह जाता है, एक सेल डिवीजन होता है इसमें. सो लेट्स जस्ट चेक आउट. ये है आपके स्टेप्स. प्रोफेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. पहले हम इसका एक डिटेल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, देन वी विल गो टू दैट डायग्राम. सो ये है हमारा प्रोफेज स्टेज. अब प्रोफेज में क्या हो गया, ये है हमारा न्यूक्लियस. लेट मी चेंज द कलर. ये है न्यूक्लियस. इनसाइड द न्यूक्लियस यू विल हैव योर क्रोमोसोम. कलर इज नॉट सो फाइन. और यहाँ पे ही ऑर्गेनल्स डिवाइड होंगे और सेंट्रियोल्स भी डिवाइड होने लगेंगे. ठीक है. सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट हो गए होंगे. ठीक है. 2 सेंट्रियोल बन गया है. और यहाँ पे न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर ये जो न्यूक्लियोलस होता है डार्क एरिया, ये भी ख़त्म हो गया है. सो दिस न्यूक्लियोलस डिसअपियरेंस होने लगता है. न्यूक्लियोलस डिसअपियर, एक तो ये होता है. फिर ये जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये भी ब्रेक होने लगता है प्रोफेज में. ठीक है. सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स, और फिर इसके अंदर जो क्रोमोसोम है ना, वो कंडेंस होने लगता है. दे बिकम मोर एंड मोर कंडेंस्ड. यहाँ इस स्टेज में आपको क्रोमोसोम अच्छे से दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो कंडेंस होने लगते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम यूनाइटेड होते हैं. यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स इनको कहते हैं. तो वो सिस्टर क्रोमैटिड्स यूनाइटेड होते हैं, लेकिन ये कंडेंस होने लगते हैं, पैकेजिंग होने लगती है इनकी प्रॉपर तरीके से. ठीक है. तो ये हो गया हमारा प्रोफेज 1. नाउ अब सिमिलरली अगर हम प्रोफेज 2 देखें, सॉरी मेटाफेज देखें, तो फिर से हमारा ये एक
सेल है, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो चुका है, ये मेटाफेज स्टेज है। सो दिस इज द मेटाफेज स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल्स है ये अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, ठीक है, और इनसे स्पिंडल फाइबर बनने लगता है। स्पिंडल फाइबर एक फाइबर की तरह है जो हमारे क्रोमोसोम्स पे अटैच होता है, और हमारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी सेंट्रियोल्स हो जाते हैं और इसमें स्पिंडल फाइबर होता है, और ये हर एक स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से, सो दैट दे कैन पुल देम, उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर सके, सो दैट। सो यहाँ पे अगर मैं एक थोड़ा ब्रॉडर व्यू दिखाऊं तो ये हमारा क्रोमोसोम है जो कि अटैच्ड होता है एक सेंटर पॉइंट पे, जिसको कि हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है, और इस सेंट्रोमियर पे एक प्रोटीन होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का है ये प्रोटीन है, काइनेटोकोर प्रोटीन, काइनेटोकोर। इसी काइनेटोकोर से यहाँ पे इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होता है। सो बेसिक मेटाफेज में क्या है कि जो क्रोमोसोम है वो अलाइन हो गए हैं इक्वेटर पे, एक प्रॉपर अलाइनमेंट हो गया सारे क्रोमोसोम का इक्वेटर पे, और स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो गया, ठीक है, सो दैट दे कैन पुल। सो दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द सेल साइकिल of the mitosis. Okay. So I can write this is the first stage and this is the second stage. Then the third stage is the anaphase stage. So again the cell will be there. This is your cell, and the spindle fibers start pulling it. Yeah, okay, I'll draw over here. This is the anaphase stage. So where the spindle fiber start dragging the chromosome to the opposite pole. So the chromosome gets separated from its sister chromatids and they get pulled up to the opposite pole near the centrioles. So chromatid sister separates, right? And chromosome separates, you can say, happen over here. Spindle fiber becomes shortened so that they can separate them. That's what happened in the anaphase stage. So this is the third stage, that is anaphase. And then comes the fourth stage, that is telophase. Yes, the fourth stage is the telophase stage. So in the telophase, things start separating. Okay, this is the last stage. Let me just clean it and redraw it. So telophasic stage, the chromosome reaches to the pole, the chromatids have reached to the pole. The organelles also get separated and a proper demarcation has been seen that okay, the cell is ready to divide. That's what happened. Here you can show them like this.
these chromosomes can be shown like this. The nuclear membrane in the telophase reappear. They try to, it's just opposite to prophase. Whatever has, disappeared, it start, nuclear membrane appear. Nucleolus also start appear. Nucleolus also reappear in the telophase. So I can draw a nucleolus also over here, right? Chromosome again starts to condense. And spindle fiber disappear because no longer spindle fiber needed, so spindle fiber disappear. These are the things happen in the telophase state. This is your telophase. Okay, I hope it's clear, all the 4 stages. Then after the telophase comes the cytokinesis, the last stage. So cytokinesis is different. For animal cell, the division starts from the rhesus or from the periphery of a cell. Like the division starts like from the outer core, and the division go slowly through the inner regions, and then you get 2 daughter cell. Okay, with the chromosome inside, nucleolus inside, and all the organelles, right? So here then it divided into 2 separate daughter cell with 46 chromosome each, right? So this is the division of animal cell. But when I show you a plant cell, plant cell is not oval in shape but pentagonal or quad shape. So in them, the division starts from the center. Central cell plate forms. This is called cell plate. And this cell plate go towards periphery, and then it divides. Okay, so the division starts from the center in the case of plant cell. Again, this chromosome number remains same. This is the chromosome, this is the nucleolus. Here also you will find the nuclear membrane reappears, and finally this also gives rise to 2 daughter cell, right, with the cell wall and all, and the chromosome and all. Okay, the nucleus and the chromosome. So this is about plant cell, and this we are learning the cytokinesis. The last stage of mitosis. This way the cell continue its cycle, and after the new cell form it again go to G1S, G2, the interphase cycle, then again come to M phase. This keeps on happening the entire cycle. So you can see here the diagram is very well represented of all these stages, right? So here we have this telophase, prophase, the nuclear membrane you can see start disappearing. Metaphase, the chromosome arise on the center, the cystochromatids. Anaphase, the chromatids get separated and reaches to the opposite pole. And in telophase, finally the division starts from the periphery and और अलग से न्यूक्लियस बन जाते हैं और सारे ऑर्गेनल्स डिवाइड हो जाते हैं. All the steps are mentioned over here, so you can go through it. If you have any doubt in the mitosis, आप पूछ सकते हैं, कोई comment है, कोई question है, पूछ सकते हैं. Next class I will bring its PYQ based question. अभी meiosis भी है, तो इसका second part meiosis will come into the next session. Meanwhile, please subscribe and hit the bell icon. Thank you.